मेरे साथियों, इंसान नुमा भेड़िया या भेड़िया नुमा इंसान और एक भेड़िए में क्या फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है। इतना बड़ा फर्क है जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। एक भेड़िया मासूम होता है। जब उसको सख्त भूख लगती है, जब वो भूख से तिलमिला जाता है, तो फिर वो आप पर हमलावर होता है, मुझ पर हमलावर होता है, वरना वो जिंदा नहीं रह सकता। उसके पास चॉइस नहीं है कि मिनरल्स खाओ, विटामिन्स खाओ, कैबेज खाओ, टमाटर खाओ, नहीं है उसके पास ऑप्शन। और जब उसकी भूख मिट जाती है तो वो फिर अपने इलाके में चले जाता है 8-10 दिन के लिए, और फिर भूखा रहता है जब तक कि उसको दूसरा शिकार न मिले। लेकिन ये भेड़िया नुमा इंसान, ये लाखों को कत्ल करता है, करोड़ों को भूखा मारता है। इसको कोई रहम नहीं, कोई रहम नहीं आता इसको, और इसका पेट भरता ही नहीं, इसकी हवस बढ़ती नहीं। ये बस मारते चले जाता, मारते चले जाता। और अगर इसको आखिरी सांस तक भी मारना पड़े तो ये थकता नहीं है। ये फर्क है भेड़िया नुमा इंसान और एक भेड़िए के अंदर। तो जब हम किसी को भेड़िया बोलते हैं तो मत बोलिए, भेड़िए की बेइज्जती मत करिए, मत करिए। आप भेड़िए की बेइज्जती कर रहे हैं। पूरा नाम बोलो, भेड़िया नुमा इंसान या इंसान नुमा भेड़िया। यह इंसान असल चीज है। यह बात मैं क्यों कह रहा हूं और कितनी तकलीफ से बोल रहा हूं, आप आगे देखिए। मैं ऐसे भेड़ियों का, इंसान नुमा भेड़ियों को आपके सामने ला रहा हूं जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लिटरली कह रहा हूं मैं, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये इंसान नुमा भेड़िए का नाम है गियोरा एलैंड। ये फॉर्मर मेजर जनरल इस्राएली आर्मी, और इसकी उम्र अब कम से कम 75 से 80 बरस है, कम से कम। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं? ये बात मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इंसान बुढ़ापे में ठंडा पड़ जाता है, उसके पास एक्सपीरियंस रहता। जो जवानी में बदमाशियां करता है, ये उम्र में आके उसको समझ में आता था कि मुझे वो काम नहीं करना चाहिए था। लेकिन एक इंसान 75 साल, 70 साल, 80 साल के बाद इस तरह की गुफ्तगू करे तो ये जवानी में कितना जुल्म कराऊंगा फलस्तीनियों के ऊपर, आप अंदाजा लगाइए। ये स्काई न्यूज पे ये इंटरव्यू दे रहा है। आप जर्नलिस्ट का चेहरा देखिए, यानी पीला पड़ जा रहा है। वो यकीन नहीं कर सक रहा कि ये आदमी क्या बोल रहा है। ये बेसिकली क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि गाजा की नाकाबंदी कर दो, करके कोई खाना अंदर से बाहर, बाहर से अंदर कोई चीज नहीं जा सकती, ना खाना ना पानी, कुछ नहीं। और जब तक के नॉर्दर्न गाजा से 4 लाख लोग वहां से निकल जाना, खाली बिल्कुल जहां जाते चले जाओ। और उसमें यह भी कह रहा है कि हो सकता है 5,000 हमास के लोग भी होंगे। बैड चॉइस, या तो सरेंडर करो या फिर यहां से निकल जाओ। मतलब आबादी पूरी सरेंडर हो जाना। और बोल रहा है कि जो एड ऑर्गेनाइजेशंस है वो लोग भी यही मैसेज दे रहा उनको कि सरेंडर करो या अपनी जान को गवा दो। Tell me the various stages of the plan that you proposed. All Gaza Strip should be closed and Israel should prevent any entrance of any supply to Gaza. And then the government of Gaza would not have any other choice but to surrender. The number of casualties on both sides could be much lower and all the hostages could be back. We completed the full encirclement of the northern part of Gaza. And what we should have done to tell all the remaining 400,000 civilians who are living in this northern part that they should leave this area. And they can live through a very clear safe corridors that we provide. And these safe corridors will continue to be open 24/7. And how will you determine who's Hamas and who's not? No, I'm letting everyone to live. Even the combatants of Hamas, everyone should live. But after 2 weeks, I will do only one simple thing. I will stop
the supply of food, fuel, and other, let's say, important material to this area of the northern part of Gaza. So those combatants of Hamas, we estimate the numbers 5,000 who will stay in this area, will face the need to make a decision between two bad choices, either to surrender or to die in starvation. And this is the most effective way to conquer the northern part of Gaza. अब आप सुनिए मेरे भाइयों कि एड वर्कर्स शुड बी कॉम्प्लिसिट इन द क्राइम। और जब वो एंकर कह रहा है, क्लिप में देख लीजिए अब आप, कि तुम बोल रहे हैं कि उनको भी क्राइम में शामिल हो जाओ, तो क्या कह रहा है? सॉरी, बैड लक, बैड चॉइस। मतलब ये 4 लाख लोग मर जाओ। आप खुद सुन लीजिए, आप खुद क्लिप को देख लीजिए। और ये क्लिप स्काई न्यूज पे है, आप स्काई न्यूज पे। तो यहां पर 2 बातें मालूम होती, इनका या तो ये पागल हो गए फ्रस्ट्रेशन में, या इनका कॉन्फिडेंस देखिए आप। और तीसरी बात, ये जंग हारने का ऐलान कर रहे हैं और सहरा जाता है ईरान के ऊपर। आप 14 महीने हो गया है, सिविलियंस को मार रहे हैं, पूरा गाजा तबाह कर दिए, मगर हमास के जो लड़ने वाले हैं वो तहखानों के अंदर छुपे हुए। ये जो तहखाने हैं इस वक्त, वो तहखानों में इस्राएल की आर्मी जा नहीं सक रही, कोई बॉम्बिंग काम नहीं कर सक रही। तो आप सोचिए ईरान के तहखानों में क्या जाएंगे आप। पूरे यानी वो लोग तो अमेरिका से जंग की तैयारी करें। ये तो अब मैं क्या बोलूं। तो ये जनरल 3 चीजों का ऐलान कर रहा है, या तो फ्रस्ट्रेशन है, या इसके ओवर कॉन्फिडेंस का अंदाजा लगाइए, तीसरा ये तो बात तय है कि ये हार तस्लीम कर चुके हैं। Without the need, number one, to have a very tough battles, without friction with civilian population, and without killing civilians, because all those civilians by that time will be out of this area. And if they can't leave, or if they don't want to leave, if they want to leave, they can easily leave. We are speaking about the need to, let's say, to walk not more than 3 or 4 miles. And in Gaza, there are thousands of NGOs and international forces employees that have hundreds of vehicles. Wait a second. They're not going to be complicit No. in the IDF's war objectives. Wait a second. They have enough trucks and they have enough ambulances so they can evacuate, let's say, those elderly people, wounded people, or other people. Why would they do that? Because as soon as they do that, they become complicit in the Israeli military strategy. And therefore, they would lose all legitimacy on the ground in Gaza with Gazan people as an independent aid organization if they start ferrying people at the orders of the IDF. Okay. If we speak about those organizations, I tend to agree with you that they are full cooperatives, or they have full cooperation with Hamas that began not a year ago. I'm not saying Hamas. I'm saying if they want to be able to operate on the ground and to give aid to people and have relationships with God, they cannot be seen to be carrying out orders on behalf of the IDF. Okay, so if they prefer not to do it and to risk the lives of those civilians who will stay there, I think that this is a bad decision. That's blackmail. What? That's blackmail. You're saying either you help them leave, the infirm, the elderly, the young, either you help them by giving them transport, or you're complicit in their death. मुझे इसकी बात सुनकर एक मोहम्मद रफ़ी का गाना याद आ रहा। दुनिया पागल है या फिर मैं दीवाना। समझ में नहीं आता, क्या दुनिया पागल हो गई या फिर मैं ना दीवाना हूं। समझ में नहीं आ रहा कहां पर है, हम कहां पर खड़े थे। जब ऐसे बयानात सामने आते हैं तो यकीन नहीं आता। बेसाख्ता इंसान बोलता है दुनिया पागल है या फिर मैं दीवाना। Okay, if
if we speak about those organizations, I tend to agree with you that they are full cooperatives, or they have full cooperation with Hamas that began not a year ago. No, I'm not saying Hamas. I'm saying if they want to be able to operate on the ground and to give aid to people and have a relationship with God, they cannot be seen to be carrying out orders on behalf of the IDF. Okay, so if they prefer not to do it and to risk the lives of those civilians who will stay there, I think that this is a bad decision. That's blackmail. What? That's blackmail. You're saying either you help them leave, the infirm, the elderly, the young, either you help them by giving them transport, or you're complicit in their death. And if they do help them, then they are effectively complicit in what the IDF is doing. And if they don't help them, what is their mission? Their mission is not to make political decisions. Their mission, which they do not comply with their mission, is to help the civilians in Gaza. So you're forcing them to make a political decision by saying you either help these people leave, or you leave them there and start. You know what? Let's start. I'm saying I will not begin the siege before I see what is happening with the civilians. And what if Hamas will leave? What if they go, fine, we're all going to go, we're going to go down south, we stay, we live to fight another day, then what do you achieve? We achieve the most important matter, and this is we conquer easily all northern part of Gaza, and it brings me why it is so important. If I conquer the northern part of Gaza and I possess this area, then I can speak to the leadership of Hamas and I can tell them, look, now I have a real leverage that might force you to release the Israeli hostages. Because if you don't do it, I will not evacuate this area. And you will have to continue and maintain your regime in an area which is much, by far, shorter or smaller than the original one, and you lost this territory permanently. So you would encircle northern Gaza, put it under a siege, not allow any aid, food, water, fuel, in order to pressure Hamas and stop. In November last year, even ago, we had a very successful and unfortunately the only hostages deal. Why Hamas, that at that time there was no big pressure, military pressure on Hamas, why they agreed to such a deal? There is only one explanation. Before that deal actually was achieved, there were only 2 trucks of supply that entered Gaza. Hamas was desperate. As part of that deal, they insisted that the number of trucks that enter Gaza will increase dramatically from 2 to 200. Israel agreed, and rightly so, because we got hostages back. ये जनरल 3 चीजों का ऐलान कर रहा है, या तो फ्रस्ट्रेशन है, या इसके ओवर कॉन्फिडेंस का अंदाजा लगेंगे, तीसरा ये तो बात तय है कि ये हार तस्लीम कर चुके हैं, न करते हुए